Question 91. The number of vertebrae in human is? Right answer is option 3, 26. Question 92. Symbiotic association between fungi and algae are called. Right answer is option 1, lichens. Question 93. The cell theory was formulated by. Right answer is option 1, Schleiden and Schwann. Question 94. Which of the following are characteristic of prokaryotic cell? तो prokaryotic cell की characteristic हैं ribosomes are made up of 50 and 30 subunits. They can have plasmids. They contain mesosomes, but they don't have peroxisomes. Question 95. Which of the following is not a part of human central neural system? Right answer is option 4, pericardium. Question 96. Mitochondrial inner membrane encloses. Right answer is option 1, it encloses matrix. Question 97. Match the list 1 with list 2. Cristae are the enfoldings in mitochondria. Cisternae are the disc-shaped sacs in Golgi apparatus. Thallikides are the flattened sacs in stroma of chloroplast. Phospholipids are present in cell membrane. Question 98. Plastid that stores xanthophyll is known as. Right answer is option 2, chromoplast. Question 99. Which of the following statements related to pituitary gland are correct? तो इसके बारे में pituitary gland से relevant statement A भी correct है, B भी correct है, C भी correct है, but statement D जो है वो incorrect है. Question 100. Photorespiration reaction catalyzed by Rubisco is shown below. इस रिएक्शन के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि X की जगह पे कौन सा जो है वो कंपाउंड आएगा. तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 2-phosphoglycolate. Question 101. Mad cow disease is caused by. Right answer is option 1, prions. Question 102. Which pigment has absorption peak at 700 nanometer in photosynthetic reaction center PS17 P700? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, chlorophyll A. Question 103. In water, frog respire using. Right answer is option 1, skin. Question 104. Which of the following represents the correct sequence of arrangement of bones in the lower limb of humans? Right answer is option 3. सबसे पहले femur, patella, tibia and dorsal. Question 105. Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves. Right answer है option 1. Question 106. Match the list 1 with list 2. Starch used in energy storage. Antibody fights in infection. Cannavalin A is a lectin. GLUT4 is a glucose transporter. Question 107. Given below are the two statements. Statement 1 है when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. Statement 2 है phylum Echinodermata, both adults and larvae are radially symmetrical. तो इसमें से हमने appropriate answers find out करना है. तो इसमें जो statement 1 है वो correct है, जबकि statement 2 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इकाइनोडर्म्स के लार्वी हैं उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. क्वेश्चन 108. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल. Question 109. How many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecules of glucose? Right answer is option 4, 412. Question 110. Which of the following plant growth regulator is used as herbicide? Right answer is option 1, 24D. Question 111. Given below are the two statements. Statement 1 है in gymnosperms the male and female gametophyte remains within the sporangia. Statement 1 correct है. Statement 2
In gymnosperm, seeds are not covered. Statement 2 is also correct. क्वेश्चन 112 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया की एग्जांपल है कोकाई, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं बेसिलाई, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया हैं वाइब्रियो और स्पाइरलम जो है वो स्पाइरल शेप्ड हैं और इसका जो मैच है वो स्पाइरेला है। क्वेश्चन 113 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलानेसी फैमिली। तो सोलानेसी के अंदर जो फ्लावर्स हैं बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स उसके अंदर 5 सेपल्स हैं एंड दे आर यूनाइटेड। स्टेटमेंट 2 भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड्रोशियम है 5 स्टेमन्स एंड एपिपेटलस, जबकि ओवरी जो है यहाँ इंफीरियर लिखा हुआ है, जबकि सोलानेसी फैमिली के अंदर जो ओवरी है वो सुपीरियर है। तो ए, बी और सी जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोलानेसी फैमिली के। क्वेश्चन 114 सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू अ ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, इसके अंदर अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले आता है रोल ऑफ एयर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल, ए एंड बी। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन 2। क्वेश्चन 115 द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स जनरेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड इन अ हेल्दी ह्यूमन इज पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 70 to 75 पर मिनट। क्वेश्चन 116 हाउ मेनी टर्म्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। राइट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन 4 18 molecules। क्वेश्चन 117 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 4 में फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि फाइब्रिन जब ब्रोकन डाउन होता है तो वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, ना कि खुद फाइब्रिन से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 118 मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें जो फैमिली है वो है एनाकार्डियेसी, जबकि जीनस है मैंगीफीरा, क्लास का नाम है डाइकोटिलेडनी, फाइलम का नाम है एंजियोस्पर्मी और आर्डर का नाम है स्पिनडेल। क्वेश्चन 119 अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस हमने फाइंड आउट करनी है वो सीक्वेंस है ऑप्शन 1 के अंदर। क्वेश्चन 120 मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है वो प्रेजेंट है पी के अंदर, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन टोमेटो, पेरिएटल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन एर्गीमोन, जबकि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है प्राइमरोज के अंदर। क्वेश्चन 121 स्फीनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू। तो स्फीनोप्सिडा क्लास है ट्रिडोफाइट्स की। राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 122 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सी और डी है। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड इन फोटो रेस्पिरेशन, देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। Question 123 smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid. Right answer है option 2. Question 124 which of the following statement is incorrect। तो इसमें जो incorrect statement है वो ऑप्शन 2 के अंदर, क्योंकि अल्फा सेल जो पैंक्रियास के हैं वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, ना कि इंसुलिन। क्वेश्चन 125 जीनस रिप्रेजेंट्स। तो जीनस एक ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 126 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। तो गिवन ऑप्शन में जो फंजाई हैं ये प्रोकैरियोट में नहीं आते। क्वेश्चन 127 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट इंटर नोड एलंगेशन प्रायर टू द फ्लावरिंग इन कैबेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 जिब्रेलिन। क्वेश्चन 128 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेजेस इज। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3। सबसे पहले G1 फेज, देन S फेज, G2 और देन M फेज। क्वेश्चन 129 मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द गैमेट्स इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगैमी। जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स इज डन थ्रू meiosis।
Question 130 given below are the two statements. Statement 1 है class name Reptilia refers to the creeping or crawling mode of locomotion. Statement 1 correct है. Statement 2 all organisms belongs to the class Reptilia have three chambered heart. तो statement 2 incorrect है क्योंकि इसमें जो crocodile alligators हैं उनके अंदर four chambered heart present है. Question 131 given below are the two statements. Statement 1 है chromosomes are fully condensed at the end of प्रोफेज 1. स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 म्यूसिस 1 रिसेंबल्स माइटोसिस, ये इनकरेक्ट है क्योंकि म्यूसिस 2 जो है वो माइटोसिस से रिसेंबलेंस रखती है. क्वेश्चन 132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स. तो गिवन ऑप्शन में जो कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है ऑप्शन 3 एब्सेंस ऑफ गिल्स, क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर फ्रेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. Question 133 length of a stem at time 0 is 20 cm. The arithmetic growth rate is 30 cm per day. What is the length of stem at the end of 7th day? तो 7th day पे जो stem की length होगी वो 230 cm होगी. Right answer है option 3. Question 134 arrange the following elements in descending order of their contribution to the percentage weight of human body. तो इसमें हमने इनकी डिसेंडिंग आर्डर में अरेंजमेंट करनी है. तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का और उसके बाद नाइट्रोजन का. तो राइट आंसर है इसका 1 A B C एंड देन D. Question 135 in frogs the number of pairs of cranial nerves arising from the brain are. Right answer is option 3 10. Question 136 which of the following is used as a clot buster. Right answer is option 1 streptokinase is used as clot buster. Question 146 which of the following are primary consumers in a food chain. Right answer is option 3 herbivores. Question 147 a population of diploid organism is at Hardy-Weinberg equilibrium if the frequency of allele A is 0.1, the frequency of double A is. Right answer is option 1 0.101. Question 148 match the list 1 with list 2. Excess growth hormones is responsible for acromegaly. Luteinizing hormone is responsible for ovulation. Vasopressin hormone involved in reabsorption of water and electrolytes in kidney. Oxytocin is responsible for contraction of uterus during childbirth. Question 149 the opening between the right atrium and right ventricle is guarded by. तो right atrium और right ventricle के दरमियान होता है tricuspid valve. Question 150 sponges exchange oxygen with carbon dioxide by. Right answer is option 1 by simple diffusion over their entire body surfaces.